اگر آج دور حاضر کا سر سید کسی کو کہا جائے تو وہ پروفیسر وسیم اختر صاحب کو آپ بے ہچک کہہ سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹی انہوں نے بنائی اکیلے دم پہ، ایک خواب انہوں نے کیسے دیکھا، کیسے سوچا، اور ایک معمولی جگہ پہ جو لوگ کرسی روڈ پہ سفر کرتے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک جھوپڑ پٹی سے اور یہاں تک کا سفر انہوں نے کیسے کیا۔ ظاہر ہے آج جس حیثیت میں وہ ہیں ان کی شخصیت ہے، لیکن جتنی بڑی ان کی شخصیت ہے اتنی ہی زیادہ انکساری ان میں پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہا جاتا ہے پیڑ میں، درخت میں جتنے زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ زمین کی طرف اتنا ہی جھکتا ہے۔ ڈاکٹر وسیم اختر صاحب ایک ایسی ہی شخصیت کے مالک ہیں۔ ایرا یونیورسٹی کے بارے میں وہاں کی ایک فاؤنڈر ممبر ہمارے سامنے پروفیسر فرزانہ مہندی صاحب تشریف رکھتی ہیں۔ اگر ایرا یونیورسٹی نہ ہوتی اور انٹرنیشنل یونیورسٹی لکھنؤ میں، تو جن کے پاس پیسے ہوتے بھی وہ شاید اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے نہ بھیج پاتے، کہ ابھی اتنی ہمت لوگوں میں شاید نہیں ہے کہ وہ بندیل کھنڈ اور میرٹھ اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں بھیج دیں، جتنے نڈر ہو کے، بے خوف ہو کے ان یونیورسٹی میں اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ احسان ہے پوری قوم ملت پہ جنہوں نے ایسی یونیورسٹی بنائی اور ہم لوگوں کے سامنے یہ موقع دیا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیج سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ باب العلم ایوارڈ کے لیے ظاہر ہے ان دو ناموں کے علاوہ بہت سے نام سوچنے کے بعد اگر شہر میں پہلی نظر میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک جب یونیورسٹی بنتی ہے تو ایک یونیورسٹی میں تمام لوگوں کو روزگار ملتا ہے، یہ تو صحیح ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ محلے، اس کے ہر ایک محلے میں، پوری گلی میں آپ دیکھیے گا ان سب کو روزگار ملتا ہے۔ آپ اگر ایرا یونیورسٹی جائیے تو جہاں سے شروع ہوگی وہاں تک، چاہے وہ میڈیکل اسٹور ہوں، چاہے ہوٹل ہوں، چاہے دکانیں ہوں، اگر یونیورسٹی وہاں پہ نہ ہوتی تو وہ ویرانی جگہ ہوتی، جہاں وہ 60 روپے زمین کبھی ملتی تھی آج 500 روپے میں ہو گئی ہوتی۔ لیکن آج 4000 روپے میں زمین ہے، یا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پاس جو زمینیں جب پروفیسر وسیم اختر صاحب نے خریدی ہوں گی، یا آج کے زمین کے جو ریٹ ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ایک جب کوئی ادارہ کوئی بناتا ہے تو وہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں بناتا، بلکہ ایک سماج کو، ایک شہر کو آباد کرتا ہے اور ہر شعبے میں روزگار پیدا کرتا ہے۔ Introducing a person of an insignificant identity is a difficult proposition. Introduction of a successful person with a distinguished career is easier to explain rather in simple words, but giving introduction of certain rare personalities is itself a test for the introducer. At the beginning of the 21st century, a great such personality, crossing all geographical boundaries, reached the height of fame is none other than a simple-looking, compassionate, soft-spoken and a great visionary person, Professor Syed Wasim Akhtar, founder and Chancellor, Integral University. Belonging to a distinguished and an educated family of Awadh, Professor Akhtar got his early education from Darul Uloom Nadwatul Ulema. He graduated from Jamia Millia Islamia University, post-graduation from Lucknow University and M.Lit from SIEFL, Hyderabad. Since childhood, he had an interest towards technical education and a spark of doing something big. The foundation stone of his dreams, the Institute of Integral Technology, was laid on 3rd November 1993 by Hazrat Maulana Sayyid Ali Hassan Hassani Nadwi, popularly known as Ali Mian, rector of Darul Uloom Nadwatul Ulema. An engineering college came up in 1998. Shri Atal Bihari Vajpayee, the then Prime Minister of India, laid the foundation stone of a residential complex on 30th June 1999. During speech, he expressed hope that the Institute of Integral Technology, having the abbreviation IIT, will maintain the same standards as the other IITs do. Integral University, a seat of educational excellence, a premier university, was established in 2004 under an act of UP government.
The university is duly approved by the UGC, MCI, Pharmacy Council of India, Indian Nursing Council, Council of Architecture, Bar Council of India, Indian Association of Physiotherapists, National Council for Teacher Education, UB State Medical Faculty and Distance Education Bureau. Integral University is accredited by NAAC and recognized as a scientific and industrial research organization by the Department of Scientific and Industrial Research under Ministry of Science and Technology, Government of India. Till now, over 35,000 students have already passed from different disciplines, and across the globe they are doing well in their careers. Today, there are over 12,000 students studying in different disciplines from India and various other countries. The university is also in collaboration with CIS countries. Approximately 2,000 teaching and non-teaching dedicated staff is always there to serve the university. It is impossible to capture in a short reference the life and achievements of a great man. I am sure much has been written and more will be written in future, which will come up for our reading and learning. Presumably, Professor Akhtar had achieved the dreams which he has seen long back. But who knows what in him is still burning for something more. We, the citizens of Lucknow, are really indebted to Professor Akhtar for giving us a center of excellence. Last but not the least, Dr. Azra Wasim, who is also an educationist, had no small role to play in building up of this premier institution. We also thank and acknowledge her great contribution. We wish Professor Wasim Akhtar live healthy and long, fulfilling his unfulfilled dreams. Honorable Sir, we pray from the bottom of our hearts for your good health, well-being and long life. We express our feelings and wish that you continue to serve the society. All the members of Awadhnama Group, Waqar Rizvi, I and all the lovers wish you good luck in all your endeavors. मेरे लिए ये बहुत बड़ी सआदत और खुशकिस्मती है कि आज इस मौके पर हज़रत अली की यौम पैदाइश पर जो यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, मुझे इसमें हाज़िर होने का शर्फ हासिल हुआ है। मैं मुंतज़मीन का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस बाबरकत महफ़िल में हाज़िर होने का उन्होंने मौका दिया। हज़रात, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी इस यकजहती कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुझे याद आता है कि मैंने जब इंटीग्रल नाम रखा था तो मेरे जहन में इंटीग्रेशन था, यकजहती थी, इसीलिए मैंने इसका नाम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी रखा था। और जिससे मेरी मुराद ये थी कि हर तरह की इंजीनियरिंग, चाहे वो इंडियन हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, अरबियन हो, उस तमाम इंजीनियरिंग को मिला के एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो वक्त की अहम ज़रूरत को पूरा कर सके। आज इस कॉन्फ्रेंस में हाज़िरी के वक्त गो कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ, लेकिन मेरी रूह इस वक्त नजफ़ अशरफ में रहे, क्योंकि मैं तकरीबन हर महीने इराक़ में मौजूदगी के बाद नजफ़ अशरफ हाज़िर हुआ करता था, करबला में हाज़िर हुआ करता था। आज जब यह हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के सिलसिले में यौम पैदाइश के सिलसिले में यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई है, तो मैं जज्बाती तौर से इस वक्त भी वहाँ मौजूद हूँ। बहरहाल, मैं इस वक्त मौका नहीं है किसी तफसीली तकरीर का, लेकिन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, मेरा ख़्याल ये है
कि इस वक्त एक यकजहती का सेंटर है, जिस तरह यूनिटी कॉलेज वगैरह वगैरह। हम सब लोग जैसा कि अभी बताया गया है कि कुछ लोगों को कुछ गलतफहमी है। हम लोग चश्मे जो लगाए हुए हैं उसमें दो वो हैं, एक तरफ सीन है, एक तरफ शीन है। मैं अलग अलग नंबर हैं, क्या बेहतर होता कि इन चश्मों का नंबर भी एक होता, सीन होता तो सीन, और एक तरफ देखते तो आपको शीन दिखता और दूसरी तरफ देखते तो आपको सीन दिखता। बहरहाल मैं तमन्ना करता हूँ, मेरी आरज़ू है और ख्वाहिश है कि इस यकजहती कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम वक़ार रिजवी साहब देना चाहते हैं वो आम हो, और हमारे दरमियान जो थोड़ा सा भी अगर कोई गलतफहमी हो उसको दूर हो। हम सब लोग मिल के शाना बशाना कदम ब कदम मिला के आगे बढ़ें और मौजूदा पुराशोक दौर के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं खत्म करता हूँ। बहुत Honorable Madam, it is the matter of great pleasure and rejoice that you have spent your valuable time to be present amongst us on the occasion of Hazrat Ali Unity Conference. Professor Farzana Mehdi has completed her GSMC Fairmar Fellowship in 2013. She has established the Department of Medical Education in ERA University. She has pioneered to start a certificate course for the health professionals education. She has made numerous presentations in national and international conferences in the field of medical education. Her field of specialization includes molecular genetics, free radical biology, toxicology, clinical biochemistry, molecular aspects of metal toxicity, male infertility, autism, metabolic syndrome, and cancer. She has received a number of research grants from agencies such as ICMR, DST, etc., and has published more than 50 papers in journals of international repute. Her current venture is to exploit molecular tools and techniques to establish a new healthcare treatment approach based on personalized medicine for the betterment of the society. Professor Farzana Mehdi is one of the founder members of ERA University. She has worked as the Director Academics at ERA's Lucknow Medical College and is presently working as the Vice Chancellor of ERA University. ERA's Lucknow Medical College and Hospital was established in 2001 with a vision to establish a center of excellence in the field of medical education, healthcare and research. After getting recognition in the year 2006 for MBBS degree course from Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and Medical Council of India, the college is now running postgraduate courses in 19 subjects. The college has been listed with the WHO, Avicenna and IMED FEMA directories and has secured place among top 30 medical colleges in India by the Veek Hansa Research Survey and also ranked third among India's top emerging medical colleges by India Today Nielsen Survey. They have an associate concern, the American University of Barbados, School of Medicine in Barbados, which follows a USA-based curriculum and USMLE-focused teaching. It is accredited by CMHP and BAC and is approved and listed with FEMAR and WFME. It is also recognized by the Medical Council of Canada in India. Medical graduates from AUB can practice as medical doctors globally after giving the requisite examination in the country of their choice, including USA, UK, Canada, India, etc. Honorable Madam and all the founder members of ERA University, we pray from the bottom of our hearts for your good health, well-being and long life.
We express our feelings and wish that you continue to serve the society and keep the fire within you aflame to tread on the challenging path of truth and excellence in the field of education. All the members of Awadhnama Group, Waqar Rizvi, I and all the lovers wish you good luck in all your endeavors. मैं प्रोफेसर फरजाना मेहंदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी चंद लफ्ज़। अवधनामा और यूनिटी पीजी कॉलेज, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी आज इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मुझको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और बाबुल इल्म अवार्ड से को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने साइटेशन में सुना होगा तो एरा मेडिकल कॉलेज और जो कि अब यूनिवर्सिटी हो गई है, उसको कायम करने में एक ख्वाब था जो कि देखा गया। उस वक्त प्रोफेसर मेहंदी हसन साहब, प्रोफेसर काजिम अली ख़ान साहब, मोहसिन अली ख़ान साहब, मीसम साहब, प्रोफेसर अब्बास मेहंदी साहब और कुछ और लोग जो बाद में जुड़ते गए, उन सब की मेहनतें, काविशें, जिसका आज ये नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि एरा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है और यहाँ पे अब सिर्फ मेडिकल एजुकेशन यानी कि MBBS और PG डॉक्टर्स के अलावा अब दूसरे मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए हैं, जैसे एरास कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, लिबरल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंसेस और कुछ और कोर्सेज। इस अवार्ड को लेते हुए मुझको ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां कुछ और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इस अवार्ड को मुझे नहीं लगता था कि मैं इसके लिए अभी इतनी काबिल हो पाई हूँ या उस मुकाम पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो उस बाबुल इल्म हज़रत अली, जिनके हम सब मानने वाले हैं, जिन्हीं ने हमको एक रास्ता दिखाया, जिन्हीं ने इल्म के बारे में हम सबको बताया, सिखाया, उनके नाम से वाबस्ता ये अवार्ड मिलने के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि जो कुछ भी हम सब ने अचीव किया है उसको और भी ज़्यादा आगे ले जाना, और सिर्फ लखनऊ में नहीं, जहाँ जहाँ तक इसकी शुआएं इल्म की पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को आगे से लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आसान नहीं है आज के दौर में इस मकाम तक पहुँचना, कई बार सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। मगर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस तरह का सोच आती है अक्सर कि ज़रूर ये उसका ही दिया हुआ काम है, उसका दिया हुआ काम है और शायद वही हमको डायरेक्ट कर रहा है,
وہی ہم کو راستہ دکھا رہا ہے اور ہمت دے رہا ہے اور طاقت دے رہا ہے کہ اس راستے پہ ہم کھڑے رہیں اور گامزن رہیں جہاں پہ اور علم کی روشنی کو پھیلا سکیں. بہت بہت شکریہ.